So, first and foremost, thank you so much for joining us for this session of Camp Talks. And I'm quite confident your insight related to TSC Camp would be helpful for a whole lot of cadets. No doubt about that. So, shall we start if everything is fine with you? Yeah, everything is fine with me. Thank you so much, Mahesh, for having me on of your session. I'm very glad to share my views with you and other colleagues. Yeah. So, first and foremost, tell us something about yourself. Why did you opt for NCC and how NCC came before you? Uh, Jai Hind, everyone. My name is Rupam. I'm from Jethia, a small village from West Bengal. So I completed my educations Kalyani. Currently, I'm pursuing BSc in IT with specialization AI, and I'm a cadet of 49 Bengal Battalion, mm, Kalyani Group, West Bengal, and Sikkim Directorate. And as a work, also I'm working as a freelancing graphics designer in my side ways. And I'm also a 10-meter air rifle shooting sports player. That's all about me. I hope it's good. Certainly. And like how NCC came before you? Why did you opt for NCC? Um, uh, yeah, I'm from a place which is being surrounded by the Air Force military stations, and so it was from my childhood dreams to be a part of the armed forces. So when I was preparing for my NDA attempts, I gave only a single attempt for NDA. It got cleared my written, but didn't. The SSB got conference out from 14 SSB Allahabad. So I was thinking that there should be a way to lead my life in a disciplined way. So the NCC is a path so that I can at least showcase myself through the parts of the NCC, like the discipline and teamwork. So I was like, okay, let's join NCC. So it was firstly, it was not very easy for me to join NCC since my university was not having NCC when I was in the first year of my college. So then I got to know about the open vacancy is being offered by some of the uh, colleges or maybe some of the universities. So I went from for the selection procedure from different college, but later they didn't see you are from an open vacancy, not from our college. They didn't allow me from 2 to 3 college in my localities. They didn't allow me. So I went for Jadavpur University, the Air Force for Tech Squadron. It's the Air Force NCC. It was there. So I was like, okay, let's try for that. They were telling if we can take it, just give a sign of your head of the institute. So I was there to take the sign of the institute to my university. So in that time, there was a sir, currently the associate NCC officer. He said, from this year, our NCC is going to get started, so you can take admission here only. So that's how the journey got ended up joining NCC. तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ क्योंकि 4 जगह घूमना पड़ा बाकी लास्ट में जो होने का था हो गया It's quite motivating. And though हम्म, there is new this you just discussed this concept of open NCC, कई सारे एस्पायरिंग कैडेट्स को नहीं पता होता है कि लेट्स से अगर मेरे इंस्टीट्यूट में एनसीसी नहीं है तो मैं बाहर किसी और इंस्टीट्यूट में आई कैन एटलीस्ट अपील कि आई कैन रिक्वेस्ट फॉर एनसीसी सीट दो हाँ विल for डिस्कस द से let's for to open vacancy the criteria is कि आप कोई institution में है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं at least that institution should give you the NOC that I have no objection regarding this cadet attending the curriculum of NCC from different institute but they have to give a certificate so they can opt for NCC from different college if they are providing the vacancies in that case. what motivated you to opt for TSC? Like TSC is not an easy camp. It's a grueling camp which goes on for like 4 5 months. फिर लास्ट में एंड हर जगह थोड़ा डाइसी होता है. यू नेवर नो कौन सा कंपटीशन में आई मेक थ्रू एंड कहाँ से मेरे को वापस आना पड़ सकता है. योर स्टडीज आर एट स्टेक. लाइक देन व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर टीएससी? Actually, basically, from the beginning, I was not कि मुझे TSC ही करना है. So it was like कि let's do a national camp which will give me some exposure. So beginning से ऐसा ही था कुछ national camp तो करे ताकि कुछ exposure मुझको मिले ताकि future में ये काम आए. So for the TSC, beginning the fact is I was not a part of the IBC team. I never participated in IBC of the TSC competitions. So I was rather in the best cadet
I was being shortlisted by the commanding officers of my unit. I think you spoke up with Tilak Ghosh as well. He was also not in the beginning. He was in the shooting competition. So I was like in the before that I was on the shooting competition. Then I went for the best cadet. So later group commander decided that some of the crucial vacancies have been there in the TAC that they should join that so that the group can stage up in the intergroup competitions. So which was like I got a call from the commanding officer of my unit and the yeah, contingent commander of the unit who was going to take the IDC team to Kontai in West Bengal. So he called me up that Bajai, I need you for the JDFS event. So it's your time to give me the results. So I was okay. I was like, okay, sir, I am packing my bag. The next day I was in the camp. So it was the month of August when I joined the camp. Colonel Lama sir told me that I am giving you the opportunity to participate. You will give me the medal. That's it. The deal is simple. You give me medal. I am happy. So I was like, okay, sir, you give me opportunity. I give you medal. No issues. So in intergroup competition, I secured the second rank among the directorate on JDFS event. Particularly, I was in the field signal group. So that's how the journey started for my TSC events of JDFS. Later on, I got these nominated by the directorate, and next attempt I got selected for the West Bengal and directorate team. And next, I participated in AITSC, and there also I secured again the silver medal in group. That's it. So I must congratulate you for all these bouquet of achievements which you brought in for your unit, for your Colonel Saab, or like whomsoever you felt deserving. So coming down to my next question, like tell us something about TSC. What is TSC? कैसा ड्यूरेशन रहता है? What all other different kind of events are there in TSC? उनके बारे में थोड़ा सा बताइए. सो TSC इज लाइक थल सैनिक कैंप. तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि दो पार्ट रहता है. एक हो गया TSC का अपना इवेंट, ठीक है, और एक हो जाता है शूटिंग. जो शूटिंग आता है इसी का पार्ट है, लेकिन ये रहता है सर्विस शूटिंग कंपटीशन. तो उसमें एसडीज और जेडीज दोनों कैडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और टीएससी का जो अपना इवेंट्स रहता है उसमें रहता है ऑब्स्टिकल, टेंट पिचिंग, मैप रीडिंग, हेल्थ एंड हाइजीन एंड जजिंग डिस्टेंस. और एक रहता है लाइन एरिया. तो लाइन एरिया व्हाट शुड आई से, लाइन एरिया एंड टेंट पिचिंग एक साथ कंबाइंड रहते हैं एक्चुअली. तो ऐसा रहता है. तो इवेंट्स के बारे में तो आई वाज द पार्ट ऑफ जेडीएफएस. तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं. जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल, ऑल टोटल वी हैव 8 members. It is being divided into four teams. 4 members for judging distance, 4 members for field signal. Next is the health and hygiene. So we have 4 cadets for the competition who will compete and one for reserve. And next we have there is map reading. They have 6 cadets. Those are going to participate in the competition. One for reserve, and I guess there is a obstacle course के लिए भी 6 ही रहता है. As you can remember, 6 ही रहता है और एक रिजर्व में रहता है. So in combinations, some rules are being allotted by the NCC. Some just like JDFS students cannot participate in other events. Likewise, the health and hygiene cadet can participate in map reading cadet as in reserve maybe or maybe not reserve, or the map reading cadets can participate in. So some of the rules are being led by the NCC. If you search go through the red book, you will definitely see. So CSC एक ऐसा इवेंट है जो आप ऑल ओवर ऑल टोटल में हमारा जो आरडी बैनर रहता है उसके अंदर 50 मार्क्स वेरी करता है. तो ऑल जो भी टीएससी का अपना इवेंट्स है, जो लाइक ऑब्स्टिकल, मैप रीडिंग, टेंट पिचिंग, लाइन एरिया, जजिंग डिस्टेंस, फील्ड सिग्नल्स, हेल्थ एंड हाइजीन, ये इवेंट्स मिला के हम लोग को 50 मार्क्स मिलता है जो फ्यूचर में जाके आरडी बैनर में जाता है. और सेपरेटली और मार्क्स जाता है जो सर्विस शूटिंग से आता है, उससे 75 मार्क्स आरडी बैनर की तरफ कंट्रीब्यूट होता है. सो नाउ कमिंग डाउन स्पेसिफिकली, जो क्वेश्चंस कई सारे कैडेट्स के मन में ज़्यादातर होता है, लाइक व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर टीएससी कैंप? लाइक कॉलेज में क्या होता है, देन व्हाट अबाउट द एट बटालियन लेवल, ग्रुप लेवल, डायरेक्टरेट लेवल, एंड देन फाइनली इन द दिल्ली, how selection procedure goes off. So tell us up to the directorate level, then we'll proceed for the how things goes on in Delhi.
Okay, definitely. So first, we definitely we start with the college level. So first, you have to show your interest to your maybe to your senior that I am being interested to this event. So if you want to check which event you are interested in, just follow the official PDFs like the Red Book. If you go through the Red Book, you will see every details about every events which are being conducted in NCC. ओके, तो फर्स्ट में आप रेड बुक में चेक कर सकते हैं कौन सा इवेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन जेडीएफएस यू कैन चेक हाउ मच मार्क्स इट स्कोर, कितना प्रैक्टिकल रहता है, डिटेल में लिखा रहता है पूरा क्या इवेंट कैसे कंडक्ट भी होता है. रेड बुक इज दैट फॉर पर्पस ओनली. तो कौन सा इवेंट में कितना क्या रहता है, तो एज पर योर इंटरेस्ट यू हैव टू चूज. लाइक इफ यू आर गुड इन स्टेमिना, योर मेंटल हेल्थ इज वेरी गुड, you are physically very good, then you can opt for obstacle and tent pitching. If you are good at studies, you can write, you can remember things very well, then you can go for the health and hygiene or maybe JDFS. Uh, if you're very good at practical kind of stuff, like you love to do practical things, like map reading is a practical based job, definitely completely. So if you're good at that, you can participate in map reading. So next, if you are completely talking about the selection procedure, first you have to show your interest in college level that this event I want to participate. You can tell it to your senior. He will directly report to your NOs and next so on. So when there will be the time of IBC, the battalion itself conducts some one CATC. Or throughout that camp, you have to nominate yourself. I want to participate in this event. So then you will get selected for that event. Choice wise, the PI staffs will select you that you are capable of participating in that event or not. They will take some few tests maybe see that you are having that knowledge about this field or not. Next, when you will participate in inter-battalion competitions, there will be some certain different camps for that. Although these activities are being laid on ACATCs only, so there will be camp if you scored well and get medal. So the group will nominate the first and second, those who are securing the positions for the inter-group team. The rest, the other members are being randomly selected throughout their best of the performance. Next, when the IBC team is being prepared, so पहला तो अपना फर्स्ट सेकंड जो हो गया वो रहता ही है. बाकी और कैंडिडेट्स और सम ऑफ द रेस्ट वैकेंसीज आर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड सो दैट कि किसी को कोई दिक्कत हुआ बीच में. सम एग्जाम्स आर आल्सो देयर सिंस एग्जाम इज अ मेन फैक्टर क्योंकि पढ़ाई पहले होता है. सम ऑफ देम मे माइट नॉट चूज टू ऑफ द टीएससी फॉर फ्यूचर में कि पढ़ाई कर लेते हैं. तो इन दैट में थोड़ा ज्यादा वैकेंसीज दिया जाता है तो वो लोग आते हैं एक साथ एक कैंप करते हैं. तो वी दे गिव एवरीथिंग नॉलेज अबाउट द इवेंट स्पेसिफिकली क्या पढ़ना होता है क्या आस्क किया जाता है दिल्ली जाके या बोलिए इंटर ग्रुप कंपटीशन में क्या होगा. द डिटेल में पूरा आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा कि how you will participate, ki what is the correct procedure to write the answer so that you will score better. So throughout 2 to 3 camps is being conducted for your practice and revisions. From this period, the basic will be very clear to you. Then the intergroup competitions happen. Then if you scored well and you are getting medals, similarly first and second directly comes to the team, and it other cadets being nominated by the directorate, and there are also some reserve candidates being taken. Then next, like before the West Bengal and second directorate team is being prepared. So for our time, it was like that. There will be a single exam. If you score well, you will be in the team. If you don't score well, you will not be in the team. It doesn't matter you are securing the first rank in the intergroup competition or the second rank. So it was like that when our time came. So the gold medalist who was there, so he didn't manage to score well in that particular division. So he didn't got selected for the ITC. So your individual performance on that moment of exam got affected to for your selection. तो इट वाज लाइक दैट ओनली फॉर आवर टाइम की सिलेक्शन ऐसे हुआ. नेक्स्ट टाइम ऐसे ही होगा पता नहीं है बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कमांडिंग ऑफिसर हु इज being assigned for the task or job. Please complete इसमें कि दो कैडेट्स को लास्ट दिन कर रख दे कि उसको बाद में भेज दे, ये उनके ऊपर है. आवर टाइम की 8 बंदे पूरे 4 के 4 हम लोगों ने कैम्प किए थे AITSC से पहले, तो पहले ही सिलेक्ट करके सबको ये कर दिया कि पढ़ाई आपका इफेक्ट ना हो क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम की सबका चलता है. इस पीएससी के दौरान सबका सेमेस्टर एग्जाम चलता ही है. तो आवर टाइम इट वाज लाइक दैट कि जब आपका आईबीसी होगा तब आपका जून में सेमेस्टर्स आ जाएगा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज
दे हैव द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जून। तो ऐसा रहा। तो बाकी ऐसा ही जो टीम बना हम लोगों को, तो वो आगे गया। एंड हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस इन दिल्ली, दिल्ली में आके कैसे होता है, व्हाट ऑल अदर कंपटीशन वन हैव टू फाइट, एंड डायरेक्टरेट का किस तरीके से कंपटीशन होता है? सो डायरेक्टरेट का जो कंपटीशन रहता है जेडीएफएस का पर्टिकुलरली, so we have a written exam which is only of 45 minutes. It has 20 marks for the objective type, 20 marks for the subjective type. 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज रहेगा, 20 मार्क्स का आपका रिटर्न का रहेगा। छोटा छोटा ही रहता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो 20 मार्क्स का 10 क्वेश्चन दे दिया तो छोटा छोटा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इट वाज पहले आपका डायरेक्टरेट में जाके पहले आपको प्रैक्टिकल्स होगा। तो प्रैक्टिकल में ऐसा है, हर एक जो ग्रुप रहता है जैसे जेडी और एफएस में 60-60 मार्क्स में डिवाइड है। तो हर एक कैडेट को 3 सिग्नल्स दिखाना होता है प्रैक्टिकल में फॉर फील्ड सिग्नल। और जेडी जजिंग डिस्टेंस में आपको 3 डिस्टेंस जज करना होता है। तो फील्ड सिग्नल का बात करें तो एक फील्ड सिग्नल दिखाने का 5 पॉइंट्स मिलता है। इफ यू आर शोइंग द करेक्ट सिग्नल प्रॉपरली विद करेक्ट प्रोसीजर्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स। यू आर शोइंग 3 करेक्ट प्रोसीजर्स विद कंप्लीट, यू विल गेट 15 मार्क्स। तो कैसा रहता है फील्ड सिग्नल में, एक फील्ड सिग्नल आपको दिखाना पड़ेगा बाई हैंड, सेकेंड आपको एक फील्ड सिग्नल दिखाना पड़ेगा बाई विसल, थर्ड एक फील्ड सिग्नल दिखाना पड़ेगा बाई वेपन। एंड फॉर जजिंग डिस्टेंस ऐसा रहता है, आपको एक से जज करना पड़ेगा डिस्टेंस, जो फार डिस्टेंस रहेगा, नियर डिस्टेंस और मिडिल डिस्टेंस। तो ये तीनों डिस्टेंस आपको जज करना पड़ेगा। इन फॉर जजिंग डिस्टेंस इज लाइक दैट, 10 मीटर्स प्लस जज करना, 100 मीटर्स आप, सॉरी पार्डन, 100 मीटर्स प्लस भी जज कर सकते हैं, कम भी जज कर सकते हैं। उस मीटर बैरियर में आप आ रहे हैं तो आपका मार्क्स नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। और जैसे कोई भी इवेंट्स, जैसे बोल लीजिए आरडीसी का बेस्ट कैडेट, दैट्स द कंप्लीटली इंडिविजुअल इवेंट। आपका इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन पूरा आपके ऊपर है, आप कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका मार्क्स आपका। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द टीएससी इवेंट्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टीम वर्क। इफ यू आर वर्किंग ग्रेट विथ योर टीम, देन यू आर गोइंग टू गेट मेडल। आपका टीम में कोई भी एक बंदा पीछे जा रहा है तो यू हैव टू ब्रिंग हिम अप, ताकि आपका टीम आगे आए। थ्रू आउट द जर्नी ऑफ एआईटीएस आई रियलाइज टीम वर्क इज अ ग्रेट वर्क। टीम में कैसे काम करना है ये मैंने बहुत बढ़िया से सीखा है। अपने टीम में 8 बंदे थे, 8 के 8 बंदे को आप जेडीएफएस पार्ट पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नींद में बोल दीजिए, वो लोग नींद में भी आंसर दे देंगे। ऐसा तरह का प्रिपरेशन रहना चाहिए मेडल लेने के लिए। तो लाइक दैट ओनली इन दिल्ली। That's quite insightful, I must say, and the way you have covered, and certainly मतलब जब आप दिल्ली में हो, हर एक डायरेक्टरेट दी बेस्ट कैडेट भेजता है, एंड या हाँ, डेफिनेटली। एंड यू आर फाइटिंग अमंगस्ट देम, दैट्स अमेजिंग. So now coming down to my next question, let's say if a new cadet aspires to go for TSC, how he or she should proceed? Does he or she should prepare something, or just opt for it and फिर उसके बाद जो भी stream मिल रहा है उसमें चले जाए, या tell us something about that. If a cadet from willing to opt for TSC, first I will suggest him to be strong with your language. Okay, if you are very good at English, it's good. If you are very good at Hindi, you have to be good in Hindi. Don't go for Roman language. Okay, so it's my preference. Don't go for Roman language. If you are going for Hindi, you have to go for complete Hindi. हिंदी मीन्स हिंदी आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से हिंदी में भी लिखना चाहिए। आप रोमन लैंग्वेज में मत लिखिए, आई विल नॉट प्रेफर दैट। इफ आई गुड एट इंग्लिश, start writing your answer in English. So it will be good to get results in future। आप क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको ही बेनिफिट मिलेगा इंग्लिश में अगर आप अपना आंसर्स लिख रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आपको बैटेलियन लेवल से ही इंग्लिश में लेना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर पूरा हिंदी में लेना चाहिए। नेक्स्ट दे आर विलिंग टू ऑफर एनी ऑफ द सब्जेक्ट। डीजी एनसीसी का एक पेशी आता है जहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट का, तो इफ दे आर गोइंग थ्रू दैट, इनका एक सब्जेक्ट है जैसे हेल्थ एंड हाइजीन, तो हेल्थ एंड हाइजीन का जितना पोर्शन है उतना ही पढ़िए। डोंट गो फॉर नेक्स्ट की अदर जगह से कुछ क्वेश्चंस मिल रहा है वो करिए, ऐसा नहीं। अगर आपको जो मिल रहा है तो वही सिर्फ ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही पढ़ना प्रेफर कीजिए, वही जगह से आपको कोई भी आंसर पूछा जाएगा।
नेक्स्ट फॉर जेडीएफएस वी हैड स्पेसिफिकली मुझे अभी भी याद है जो स्पेशल सब्जेक्ट का पीडीएफ रहता है उसमें पीडीएफ का 41 पेज से 65 पेज तक वो आप पढ़ लीजिए पूरा वही उतना ही पेज में पूरा दिया हुआ है उससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए उसी से आएगा उसी से आपको आंसर करना है यू हैव टू मेक योर आंसर्स इन दैट पार्ट ओनली कैसे अगर आप बोले तो कैसे प्रिपेयर करना है आई वुड से कि पहले आप एक बार एक सब टॉपिक पढ़ लीजिए जैसे इंट्रोडक्शन टू फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट आपने पूरा पढ़ लिया आपने पूरा बंद कर दीजिए वहां पे जितना भी आपने पढ़ा उसको एक बार आप लिख लीजिए फिर से उसको पढ़िए नेक्स्ट डे ऐसा रिपीट कीजिए पूरा आपका उतना ही पेज में ज्यादा पेज में 20 मैक्सिमम 20 पेज रहेगा यही प्रोसेस रिपीट करते जाइए तो आपको पूरा याद हो गया पूरा याद होने के बाद आपको क्या करना है in our directorate time and the IGC time, there's Ustad named Naib Subadar. Uh, I guess I can't recall his name. It's been 6 months actually. Uh, Naib Subadar Borwan sir, and he made us study in like that way. कि आपने पढ़ लिया पूरा. Now it's the time to ask the questions to yourself. Start asking, making questions from the PDF line by line. कोई भी क्वेश्चन हो छूटना नहीं चाहिए हर एक सब टॉपिक से भी एक एक क्वेश्चन बना के आप पूरा जो फॉर्मेट दिया हुआ है 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हर एक टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनाइए तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स क्वेश्चंस रहते थे एक दिन में हम 8 लोग मिलके बना लेते थे पूरा इसको तो इट वाज लाइक दैट ओनली कि आप पूरा ऐसे प्रिपेयर करिए ताकि आपको पूरा अच्छे से याद हो जाए बाकी आपका अगर कोई अ, अलग मेथड है इफ आर गोइंग गुड विद दैट यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट ओनली आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट बट मैंने ये फॉलो किया है ऐसे रिवाइज किया है ऐसे मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आपका रिजल्ट आएगा ही ऐसा आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम देने के बाद आपको ऐसा आपका आपको खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे मेडल मिलेगा एग्जाम देने के बाद आपका टीम को कॉन्फिडेंस आने वाला है भाई हमको मेडल मिलने वाला है it was like in Delhi when we were in Delhi we wrote the exam and practical भाई हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मिलने ही वाला है इन तीनों में से तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है यू आर दैट मच होपफुल आफ्टर राइटिंग द एग्जाम so since preparation matters a lot if you are prepared well you are very confident to get medal in nationals. And so there are some common doubts around the TSC camp. And another thing is, what is the role of height and stamina, like height of a cadet, and what kind of stamina he or she possesses in his or her selection in a TSC camp? So height if you are opting for obstacle and thin pitching definitely you should have a standard height not like कि आप बहुत लंबे होने चाहिए नो कुछ ऐसा लेट डाउन नहीं किया है रूल बट आपका एक स्टैंडर्ड हाइट रहना चाहिए क्योंकि आपको वो काम करना पड़ेगा 6 फीट वॉल जंप करना पड़ेगा तो आपका एक स्टैंडर्ड हाइट रहना चाहिए अगर आपका हाइट एकदम कम है सपोज कोई भी है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम दैट easily you can definitely I would say a story in our IBC part. I was definitely that time I was not a part of the team. There was a guy named Cadet Shivam. He is not that high, but if you compete with him, the 6 feet tall guy will also fail. So, but later on he didn't got selected. I don't know why, but he was the guy who is not having a short height. He can complete the obstacle course in less than since our was a long course, more less than 40 seconds, I guess. Uh, तो हाइट का उतना इश्यूज नहीं रहेगा इफ यू कैन compete yourself with the other cadet, then you have to get the selections. You will proceed in nationals. And regarding stamina, definitely throughout the journey of AITSC, I realized if you are completely physically fit is okay, but you have to be mentally very strong. Since you are going to face the hottest summer in this period, समर में आपको कैंप करना है लगातार कैंप करना है आपको गर्मी में पूरा कैंप आपका इधर ही कट जाएगा इस साल का इफ आर गोइंग फॉर AITC 2024 तो यू हैव टू बी मेंटली सो स्ट्रांग दैट आपको कोई भी टास्क दिया जाए आप कोई भी टाइम पे कंप्लीट कर पाए so the resulting of AITC is every cadet की after the camp they are ready to do anything they get this kind of stamina after the camp so फिजिकल तो अच्छा रहना ही पड़ता है साथ साथ आपको मेंटल भी बहुत अच्छा प्रिपेयर रहने पर इमोशनली आई वुड से आई एम एन इमोशनल गाय सो डेफिनेटली आई एम इमोशनली ठीक है बट इमोशनली भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा कोई भी सिचुएशन के लिए क्योंकि
Selections are quite hard. बाद में जाके आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, you might get feel low, but it's not better luck next time. Maybe God has decided something better for you. That's quite motivating, I must say. And you said very rightly, uh, like if you are failing at one point or in one competition, that does not mean like you are worthless, or like you cannot Yeah. go for something else and you cannot achieve something else. Certainly there are different paths started for you maybe, which you haven't discovered. You mentioned Hmm. very rightly. So now coming down to, like, I ask this question to everybody whosoever I talk with, especially when it comes to NCC being a youth organization. What kind of changes you feel has brought in due to NCC? Like how you see Rupam before joining NCC, before doing this TSC camp, and Rupam who has attended all this and have gone through the grueling. Hmm. Okay. So definitely, before joining NCC, I was a bit a shy guy to speak up with other people. To introduce myself, I might get fumbled very much, like I am speaking now. Maybe I'm fumbling now also, but इससे भी ज्यादा होता था पहले. उतना नहीं होता, उतना ये था कि उसके बाद एनसीसी ज्वाइन करने के बाद जो एक्सपोजर मिला मुझे थ्रू आउट मेनली, आई वुड लाइक टू थैंक कर्नल लामा. सो ही थ्रू आउट द जर्नी ऑफ एनसीसी मोटिवेटेड मी अ लॉट. ही ट्रैक माय वे, माय पाथ, कि आपको ऐसा करना चाहिए सिंस यू हैव द कैपेबिलिटी, सो यू कैन ऑप्ट दिस इन फ्यूचर. सो एनसीसी थ्रू मुझे बहुत ही ऐसे ट्रैक दिया कि मेरे लाइफ को मैं कैसे आगे लेके जाऊं, इसको शेप करने के लिए बहुत गाइडेंस मिला. इफ यू ज्वाइन एनसीसी एंड आपको लाइफ में कुछ अच्छा करने का रास्ता तो जरूर मिल जाएगा. सो इट्स लाइक दैट कि ऐसा है मेरे लिए. बाकी आप ज्वाइन कर रहे हैं, यू हैव टू डिसाइड योर ओन पाथ कि आप मकरा कैडेट है या फिर आप अच्छे कैडेट है. बाकी ऑल कैडेट्स आर मकरास, दैट मकरा इज ओके, बट रगरास आर ऑलवेज रगरास. Yeah, you mentioned very rightly. Like I always say that NCC is an ocean of opportunities. Grab whatever you can, whatever kind of Yeah, quality definitely. you are having, there is camp for you. You want adventure, you go for mountaineering, you go for para and other camps. You are very good at studies, go for best cadet somewhere. You want to experience a bit of army kind of life, go for TSC. You want to see the limelight kind of stuff, go for RDC. You'll meet a whole lot of dignitaries, AO, and full limelight. Even when you'll come Yeah. back, you'll be in limelight in your college. You can visit a foreign country, go and opt for YEP. That you name a thing, there will be something to train you in NCC. That kind of organization is the NCC. Yeah. The only thing is we need to find out what we want to achieve, and even if you go motiveless, कि ठीक है, whatever will come in my way, I'll learn. You'll learn more than a motivated guy, because the daily Hmm. things which we do daily, coming to the parades, having that kind of discipline, you have to manage your studies along with the parade, you have to appear for your own semester exam as well as NCC exams. So there is whole lot of training throughout the NCC journey. डेफिनेटली. तो बनती है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे लाइफ में, ऐसा कॉन्फिडेंस तो मेरे को है. ठीक है. बाकी लेट्स सी वेयर द डेस्टिनी गोस. सर्टेन. सो हमने पहले भी डिस्कस किया था. टेल अस समथिंग अबाउट ओपन एनसीसी. क्या होता है, किस तरीके से होता है, एंड हु आर द एस्पायरिंग कैडेट्स हु कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट? सो इफ वी टॉक अबाउट द एनरोलमेंट ऑफ एनसीसी, तो एक रहता है नॉर्मल वैकेंसीज जो आपके कॉलेज में रहता है. तो फॉर योर कॉलेज देयर विल बी एन एनो एंड he will be the teacher of the college. So he will give vacancies to the battalion. Like एक ईयर में आपके कॉलेज को 10 वैकेंसीज मिला, तो आपने वहां से कंप्लीट किया नॉर्मल वैकेंसी. सो इट्स लाइक दैट कि इफ आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर ओपन वैकेंसी, आपका यूनिट जो है हर एक कॉलेज को एक दो करके ओपन वैकेंसीज देता है कि हाँ, चलो कोई दो आदमी को भी ले सकते हैं आप बाहर से. So for that, I guess it's an official work being led by the commanding officer if he allows the NOs to take that cadet, and also the cadet should have the clearance from his or her college that they want to opt for NCC through the open vacancy. तो ऐसा रहता है ओपन वैकेंसी का क्लियर.
I'm done with my question. Anything you would like to share from your end about TSC camp, JDFS, or some general thing related to NCC or anything? Like, podium is all yours. Okay. So there is a lots of stories. I am very confused. Which one should I share with you? Let's share something which is funny. So uh, throughout the journey who are in the NCC, they might know that they have to perform some duties throughout the camps. So they are being entitled for certain tasks like the night duties or gate duty maybe. So when we were in the part of inter-group competitions, we have been into Kontai, West Bengal. So there we are in the PK college name particularly. So our Ustad said that we have to protect our weapons. So we have to detail one cadet for 30 minutes at पर 30 मिनट्स पर 24 आवर मतलब चैनल करके कितना कितना आप भी रह सकते हैं तो 30 मिनट्स में भी ऐसा करने हैं तो आपके आप हिसाब से आप देख लें सिंस आई वाज दी one of the seniors so I was being assigned for detailing the cadets for the duties so I detailed one of the optical guy I will not mention his name okay so he went for the duty at 2 a.m. uh, Definitely he is good he woke up got to got to the duty got to say them so what happened is I got the call from the Ustad at night 2:15. Where are you? I pick up the call. Where are you? He was saying कि कहाँ पे है तू? मैं सर स्लीपिंग तो बोल रहा है कि इधर आ मेरे पास अभी तो उन्होंने कॉल किया कि आजा यहाँ पे देख जा कितना विचित्र कांड घटा है मैंने सोचा यार रात के 2 बजे क्या विचित्र कांड घट गया है उस्ताद फोन करके अभी तो मेरा रगड़ा लगने वाला है सीनियर को बुला रहा है तो इसका मतलब कुछ तगड़ा किया है उसने इसलिए रगड़ा लगने वाला है तो आई वाज आल्सो लाइक अच्छा अकेला सीनियर मैं ही थोड़ी हूँ सबको लेके चलूंगा और मैं आदमी भी हूँ। आई वाज लाइक उठ यहाँ से उठ दे आर स्लीपिंग पूरा इधर रात के 2 बजे एकदम बढ़िया नींद में सोते हुए उन्होंने तो बोला कि आजा अंदर तो मैं अंदर गया उसके साथ साथ मेरे दो और भी फेलो कैडेट्स अंदर गए तो ही वाज लाइक एक और एक उस्ताद थे उसके बगल में एक पिलो रखा हुआ था उसी को वो लपेट के उसी के साथ सो पड़ा है तो लाइक अभी बता कि यहाँ से बंदूक चोरी हो गया तो कौन देगा लाइक सर चोरी नहीं होगा बोले हो जाएगा तब क्या होगा अभी उसने बहुत नींद में थे तो उसने बोला देख ही इज ऑल योर्स यू विल टेक केयर ऑफ हिम कैसे डील करना है तू देख ले तो आफ्टर दैट वी थ्री वर इन द प्रोसेस कि अच्छा अभी तूने इतना तगड़ा काम काम कर ही लिया है तो हम लोगों का नींद तूने उठा ही लिया है तो हम भी तेरा नींद थोड़ा देखते हैं कैसे उठाया जा सकता है nothing to discuss about it all the cadets who are I listening I they can understand I what got a happened to very him at fair that idea. Yeah, yeah. So so this was the yeah, most funniest part of my IGC all these stories kept on happening in NCC. That was amazing. Like, yeah. so yeah, यही है your बाकी जर्नी ऑफ एनसीसी में मुझे दोस्त नहीं मिले मैं ऐसा बोल सकता हूँ मुझे कोई दोस्त नहीं मिला मुझे फैमिली मिला है कोई भी फ्रेंड्स मोर देन फैमिलीज मुझे तो ये फील हुआ क्योंकि मैं अभी कोई भी जो दोस्त मिले हैं जैसे तो कभी किसी को भी फोन करूँ जैसे आई एम इन इमरजेंसी कहीं पे भी हो दे विल डेफिनेटली गिव मी अ कॉल बैक एंड ट्राई टू सपोर्ट मी सो दिस इज द थिंग विच आई अर्न मेडल्स वगैरह तो मिलता रहता है ये सब और ग्लोरी है लेकिन जो सपोर्ट और जो फ्रेंड फैमिली मैंने बनाया है ये 2 साल के जर्नी में इस यही एक प्राप्ति है आप बोल सकते हैं कि इफ यू जॉइन एमसीसी यू विल डेफिनेटली आपको मेडल मिले या ना मिले इफ यू गेटिंग सक्सेस और नॉट बट यू विल डेफिनेटली गेट ए वेरी गुड फैमिली थ्रू आउट द जर्नी हाँ कि अब मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स भी आज कोई बाहर है और दूसरे डायरेक्टरेट में भी है इफ आई इन सिचुएशन आई नीड देम दे विल बी देयर विथ मी कोई भी टाइम हो या फिर कुछ भी जस्ट यू हैव टू गिव अ कॉल अप ऐसा सिचुएशन है डेफिनेटली दे विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो यही है जो चीज एमसीसी से मिला है मुझे तो मुझे गर्व है इस चीज पे और कुछ नहीं that's really nice.